Catia software in your system, either Catia V5 or 19 or V5 or 20 or 21 version. This is version it. Okay, so this Catia is full form is computer aided 3-dimensional interactive analysis. Okay, so on that basis directly goes to that right click and open. So already it is open, ये open किया हुआ है। तो ओपन करने के बाद हम लोग जाते हैं सीधे स्टार्ट्स में। ठीक है, स्टार्ट्स में जाने के बाद मैकेनिकल डिजाइन एंड और इसमें जो है पार्ट डिजाइन, यू हैव टू गो फॉर पार्ट डिजाइन एंड स्केचर। अगर कंप्यूटर एडेड डिजाइन तुम लोग नहीं पढ़े हो कैड में, सो इफ यू गो टू कैड में अगर जाओगे तो कैड में 3 मॉडलिंग्स होता है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, एक्चुअली ज्योमेट्रिक मॉडलिंग मींस यू ड्रॉ एनी ज्योमेट्री with the help of computer. So this is in geometric modeling 3 types of modeling, 3 टाइप का मॉडलिंग होता है। एक आपका हो गया लाइन मॉडलिंग, उसको जिसको वायर फ्रेम मॉडलिंग भी ऑल्सो इज कॉल्ड वायर फ्रेम मॉडलिंग, आइदर लाइन मॉडलिंग यू कॉल्ड और वायर फ्रेम। दूसरा होता है सरफेस मॉडलिंग और तीसरा होता है आपका सॉलिड मॉडलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टुडे अबाउट वायर फ्रेम मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग कैसे करेंगे यूजिंग लाइंस। ठीक है, तो उसके लिए स्केचर में हम लोग जाएंगे। स्केचर में जाने के बाद सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? रुक के आ रहा है सर। I will see. You should have one key. You should have one key for that room key. ठीक है? Okay, sir. But I have no, sir. You give me. I'll give you one key. Okay. No, you keep it with you. And if anything is there, उसको उसमें थोड़ा सिस्टम लगा के कंप्यूटर में बनाना भी है। हाँ ठीक हो। ठीक है? हमारे पास 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। मेरी टेक्स्ट वाली जब तक कुछ अगर नहीं है तो जो टेबल पड़ेगी ना इधर-उधर अपने डिपार्टमेंट में लगा के आप सब की दे दीजिए ना, बाकी कर देंगे। Okay, so we'll see that नहीं आ रहा है वॉइस। सर क्लियर है ऑडियो सर? ऑडियो क्लियर है ना? ओके सर। किसको क्लियर नहीं आ रहा है? एनीबॉडी नॉट क्लियर साउंड? वॉइस क्लियर आ रही है ना? किसी को वॉइस में प्रॉब्लम अगर होगी तो बताना। ओके नो सर ओके। तो हम लोग यहाँ पर वायर फ्रेम के बारे में बोल रहे थे, तो इसमें से हम लोग जाएंगे स्टार्ट्स के बारे में एंड आफ्टर दैट मैकेनिकल डिजाइन देन स्केचर। अभी पार्ट डिजाइन हम लोग नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द स्केचर। स्केच में जो लाइन ड्राइंग होता है, तो एक्चुअली आई एम आल्सो अनाउंसिंग दैट मे बी टुडे विल क्लास अप टू 3:30 बिकॉज वन सिस्टम इज नॉट वर्किंग। इसी कारण तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो तुम्हारा मतलब टाइमली और ये होगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक कुछ देख लेते हैं। अभी 15 और 17 मिनट्स है 3:30 तक। ये दूसरे कंप्यूटर से मैं ले रहा हूँ, एक्चुअली सम प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। तो स्केचर में क्लिक करते हैं। स्केचर में क्लिक करने के बाद एनी नेम, सपोज एनी नेम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर एनी नेम यू विल लाइक जैसे यू कैन पुट, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है द न्यूली एडेड, यू नो दैट। इसमें हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं, लाइक टुडेज कोई एक कोई मॉडल 1 ही नाम दे देते हैं, मॉडल 1। दिस इज कॉल्ड मॉडल 1। ठीक है, तो क्लिक कर दीजिए। ओके, सो दिस नेम इज मॉडल 1, दिस मॉडल 1। And here a screen window is open. So what are the means this, what is name of this? So this is called, this XY plane, YZ plane, ZX plane, part body, this model, this whole is called specification tree. Means whatever you are doing here, this all will be added in this. This all will be added in this your tree, specification tree. Whatever you will do, like any line draw, any curve draw, so this all will be added in this part body. Okay, so when we'll draw any sketch, then it will, so that this will add here, यहाँ पर add हो जाएगी। तो ये हो गया, इसका नाम हो गया स्पेसिफिकेशन ट्री। एंड दिस इज डिफॉल्ट प्लेन्स। ये प्लेन है, देखो एक प्लेन है XY प्लेन,
यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, XY प्लेन है, ये तुम्हारी क्या है YZ प्लेन है, और ये क्या है ZX प्लेन है, ठीक है। आइदर कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करने, क्योंकि अभी जो स्केचर होगा 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा, तो आइदर XY प्लेन, YZ प्लेन या ZX प्लेन, आइदर यहाँ से आप सिलेक्ट करो, और यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट डायरेक्टली, सपोज ये सिलेक्ट यहाँ से कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिसिटी, दिस इज डिफॉल्ट प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड XYZ, दिस इज कॉल्ड कंपास, इसको हम लोग कंपास बोलते हैं, ओके। एंड दिस राइट डाउन कॉर्नर जो है ये तुम्हारा XYZ है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्लेन, ये ज्योमेट्रिक प्लेन है, ओके। सो दिस इज ज्योमेट्रिक प्लेन, दिस इज कंपास, दिस इज डिफॉल्ट प्लेन्स एंड दिस इज स्पेसिफिकेशन ट्री, एंड दिस इज पुल डाउन मेन्यू, ये पुल डाउन मेन्यू, अगर क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेन्यू आएगा, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, ओके। तो इसमें से ये जो राइट साइड में जो ये सब दिख रहे आइकन्स दिख रहा है, दिस आइकन्स इज कॉल्ड टूल्स, इसको हम लोग टूल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, इसको यहाँ भी रख सकते हो, ऑल दिस आर टूल्स, ये टूल्स राइट में रहता है। इफ यू वांट टू इसको लाना चाहते हो, देन यू क्लिक हियर एंड पुट देयर, ये तुम्हारा आई टूल्स हो गए, दिस आर कॉल्ड टूल्स, ओके। इसी टूल्स के यूज करके हम यू कैन ड्रॉ एनी डिजाइन लाइन 2 डायमेंशनल, किसी स्केचर डिजाइन। तो फर्स्ट एंड आपके व्यू टूल, यहाँ एक व्यू टूल भी होता है, देखो ये बॉटम जो ये है आपका बॉटम्स में एक व्यू मेन्यू में, दिस इज कॉल्ड व्यू। ऑल हैव सम मीनिंग्स, ऑल हैव सम, इसका ये है यूज है। एट द टाइम ऑफ यूजिंग आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देखेंगे कोई एक प्लेन्स के बारे में, पहले जैसे एक सिलेक्ट कर लेते हैं XY प्लेन, कर लिए टूल्स आ गया। So we'll discuss one by one tool. So this will be helpful to know how, ये बेसिक स्पेस है, बेसिक आप नहीं जानते हो तो दिक्कत होगी। इसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि अभी नहीं आया है इसमें, जैसे इसमें है कि ये जो लाइंस बना हुआ है, दिस इज बिगर लाइन, दिस इज डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रेजुएशन है। ये जो ग्रेजुएशन है वो कितना mm का है, ये 10 mm का डिस्टेंस में है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 100 mm है। दिस मीन्स डॉटेड लाइन इज जो डिस्टेंस है डॉटेड लाइन के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स डॉटेड लाइन्स इज 10 mm एंड द होल लाइन्स दिस एंड दिस वन, जो होल लाइन्स है रिस्पेक्टिव होल लाइन्स, उसके बीच में कितना है 100 mm। देखो यह 10 mm, 10 ग्रेजुएशन है, 10 भाग में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये एक बेसिक ये है कि हाउ वी विल टेक स्मॉल, ये तो 10 mm है, हम 5 mm को भी अगर लेना पड़े तो कैसे लेंगे, हाउ विल टेक यू एज्यूम 5 mm। इसके लिए यू फर्स्ट गोज टू दिस टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू में क्या है, दिस यू कैन टूल्स, ये टूल्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये टूल्स देखो टूल्स। सो दिस टूल वी क्लिक हियर, क्लिक करने के बाद वी गोज टू ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपका आता है स्केचर, यू कैन सी ऑप्शंस, जनरल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मैकेनिकल डिजाइन, दिस इज मैकेनिकल डिजाइन, दिस in mechanical design you assembly design, then sketcher, you click this sketcher, and when you click this on this sketcher, this is open and you see that here grid. So here horizontal 100 mm graduations means how many parts, 10 parts. If you want to minimize or take lesser, suppose 50, you can change 50, and graduations you can also take 5, no problem, and leave it, इसको हम 10 ही रखते हैं। तो अगर 50 लेंगे तो इसमें क्या हो, जो 10 है वो 5 हो जाएगी, देखो यू कैन ओके कर दीजिए, छोटा छोटा 5 हो, 1 2 3, ये बिगर था। अब हाउ टू नो दैट ये 5 कैसे होगा, तो एक कोई भी लाइन ले लो, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 मैंने कर दिया। अब इसका 50 है कि नहीं, हाउ यू नो दैट दिस लेंथ इज 50, so directly we give a 25, so 5 total how many, 5 graduations, 5 जो 25, so 25, it means इसका जो 5 है, इसका जो ग्रेजुएशन है वो 5 आ गया। तो जो बाय डिफॉल्ट होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू डॉटेड लाइंस इज टेकन एज 50, तो अब इसको 10, तो उसको 10 ही रखते हैं। गोज टू टूल्स, ऑप्शंस, and then sketcher, then goes to grid, and this horizontal is 100,
और जब ये 100 करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल भी वो 100 ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, बिकॉज दिस साइज इज टेकन एज ए स्क्वायर साइज ये ऑटोमेटिक ले लेती है, ठीक है। तो इसको ओके कर देते हैं। So this distance between these two vertical lines and horizontal lines is 10. Means square, the smaller square size is 10 mm. One also more thing. Suppose this is a tool. इस tool को मैं hide कर देता हूँ, इसको close कर देता हूँ. And how will get? इसको हम कैसे फिर से प्राप्त करेंगे? We'll find. So again you go to this tool. Then here customize. कोई भी जैसे टूल बार नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, कुछ टूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये टूल है, ये टूल भी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये टूल हम कहाँ से लाएंगे? ये टूल, ये सब टूल कहाँ से लाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? ये टूल है, टूल को यहाँ से कस्टमाइज ही करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज करने के बाद ये कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज करने के बाद क्या करेंगे? इसमें कस्टमाइज करने के बाद हम लोग जाएंगे टूल बार्स में, टूल बार्स। Then you click on this restore all contents. जितना ये contents है वो restore होगा। Restore, click and this restore contents, a dialog box is open here, OK or cancel. Then you click on this OK, OK कर दी, ये restore हो चुका है but you have not seen। अब उसको reposition करना है यहाँ पर लाने के लिए, reposition। Again you सारा इसमें आ जाएगा। देखो इसके जो टूल था ये भी नहीं था, जितने भी whenever some tools is not come on the screen, then you go to directly tools. I'm again repeating these tools, then customize, then toolbars, click, then restore all tools, then OK, then again restore position, then OK, and then close. So this, अब यहाँ देखो आया ना sketch tool. So this is called grid. ये जो grid है, अब ये grid अगर open है, active है, if you want to deactive, you can click on this. All right. Suppose it is not clearly seen. Sometimes the picture is not clearly seen due to these lines, these grid lines. जब ये grid lines के कारण नहीं दिखाई पड़ा तो इसको hide कर देना, ठीक है, deactivate कर देना। And snap to point, also another point is snap to point. Snap to points means हो गया कि जैसे कोई point है, जैसे grid को मैं on करता हूँ, कोई भी point जैसे यहाँ पर लेना है, जैसे एक line draw करना है, तो ये line यहाँ middle जो इसकी square का middle है, can't draw a line from the middle if this snap to point is active। अगर ये एक्टिव है, अगर ये एक्टिव है तो इसके मिडिल से कोई पॉइंट, कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं मिडिल फ्रॉम दिस बॉक्स, बट ये नहीं हो रही। कहाँ हो रहा है? कॉर्नर्स ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, जितने भी ग्रिड लाइन से है, परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसका इंटरसेक्शन से ही हो रहा है। ये देखो कहीं भी लोग इंटरसेक्शन में, मिडिल में नहीं आ रहा है, मिडिल में नहीं आ रहा है, देखो मिडिल में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डीएक्टिवेट दिस स्नैप टू पॉइंट। अब हम कहीं से भी, सपोज यू वांट टू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम दिस मिडिल पोर्शन और एक कॉर्नर, कहीं भी इसका इनसाइड में हम ले सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। इट इज क्लियर? ओके, तो ये चीज है, ठीक है, स्नैप टू पॉइंट। अब जैसे हमको देयर इज नो नीड टू दिस दैट हम we have to taken this from middle one से लेना है, तो इसको हम लोग यहाँ से इन कर देंगे। अब इसमें जब when we open draw a line, then it is not possible to draw from the inside of this, यहाँ से नहीं कर सकते। ये अगर ऑन है तो यहाँ इनसाइड नहीं कर सकते, ये है ना, तो यहाँ से नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ से हम लोग नहीं कर सकते, कहीं से नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्रॉम मिडिल, कहीं भी मिडिल से नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। बट ठीक है, देखो यहाँ नहीं ले सकते, कहीं भी लाइन पर होगा। एंड उसके बाद इसको इफ यू, अब इसको खत्म करना है, यू हैव टू क्लोज दिस, यू इस क्लिक दिस एस्केप फ्रॉम योर कीबोर्ड 2 टाइम्स एस्केप, और एस्केप नहीं करोगे तो जैसे ये कर नहीं, ये एक्टिव है ये, और इसको यहीं तक लाइन लेना है। द लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, नो नीड टू फर्दर लाइन। देन हाउ टू यू, देखो ये जो है ना इसका टिप, ये तो मूव कर रहा है, एक्टिव है, यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस आइकन, राइट साइड आइकन, देन यू दिस। तो ये हो गया ग्रिड्स के बारे में, यू नो वेरी वेल। एंड दिस ओके, ये ग्रिड्स के बारे में हम लोग जान गए।
ओके ये ग्रिड्स के बारे में ओनली वी नो वेरी वेल एंड देन ग्रिड्स के बारे में जान गए, स्नैप टू पॉइंट जान गए, देन ये टूल जो कस्टमाइज कैसे करना है, ऑप्शंस जो यहाँ पर एक ये ग्रिड के बारे में हम लोग जान गए, you know very well. After that the very important thing is that suppose a model is given and this model का जो size है, the side of this model size with dimension is given in feet, वो feet में दिया हुआ है. Suppose एक लाइन है ड्रॉ किया मैंने, ओके इसको डायमेंशन कर दिया, it is given mm, but in our model it is given in feet, then how will change into feet? अब ऐसा तो नहीं कि अब फिट दिया तो फिर उसको एमएम में चेंज करेंगे, इट इज सो मेनी लेंथी प्रोसेस. ओके इसके लिए क्या करना है, सो यू हैव गिवन ऑप्शंस इन दिस कैटिया, इसमें टूल्स में गए हैं, टूल्स में जाके ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर जो है देखिए पैरामीटर्स एंड मेजर्स, ये जनरल्स में है, ऑप्शंस के बाद पैरामीटर्स एंड मेजर्स, इसमें जाने के बाद यूनिट्स, यू क्लिक ऑन यूनिट्स, देन लेंथ इज गिवन हियर मिलीमीटर, यू क्लिक बिलो 1 mm is given. इससे काम नहीं लेगा, ये इससे नहीं, ई वाला सर ये काम खाली इसको निकाल दो, इसका जो होगा फिर सुनाई कैसे पड़ेगा, इससे सुनाई जाएगा यार, और फिर आपको ये जरूरत नहीं, इसका जरूरत नहीं है, इसको क्या तो क्लास कहाँ लीजिएगा, मैं पेन रख ओके एवरीबॉडी गेटिंग माय वॉइस, मेरा वॉइस मिल रहा है ना, Yes, sir. okay so continue. After that we have to change this length unit into mm, we want to need this change into mm, तो इसको लिए mm change करेंगे, so click this one millimeters, so many units is given in meter, centimeter, kilometer, inches, foot, in which unit you want to need for this model. मान लो इस मॉडल को अभी हमको इंच में करना है, जब इंच में उसका नेक्स्ट मॉडल करना, you have to change into, you work on millimeter, then again you come to this tool and then these parameters and measures and then units and finally you change into meters, इसको millimeter कर देंगे. तो यहाँ I'm showing this कैसे change हुआ, इंच कर this, you click this again, this one already I have taken how many mm, 80 mm, 80 को डायरेक्टली वो चेंज करके 3.5 mm करता है, वो ऑटोमेटिक चेंज भी करता है, ठीक है. अगर मान लो बाय डिफॉल्ट इसको 3.5 इंच में आ गया, तो इसको हम लोग अभी mm में ही रख देते, goes to tools, then goes to this options, then this is inch, this is millimeter, then okay this is 80. Okay, so everyone you knows that how to change the units and also the what is the grid lines, जो grid lines है, ये जो divisions है, इसको graduations बोलते हैं in terms of टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, जो डिविजन्स है ये 10 mm करके है, 10 millimeter. If you want to change this 10 mm 10 millimeter, then you goes to these tools and then options, in options again goes to this mechanical design, in mechanical design sketcher, in sketcher this grid you have to change this graduations, ये 10 की जगह 5 चाहते, you want to graduation जो divisions 5 you have to put and then specific अगर जितना जाते हो 2 mm 3 mm 5 mm 0.5 you have to, according to this you have to put the value and you will get this. Okay, and इसके बाद हम लोग ये already talk about this grids. If you don't want to show these grid lines, you unhide this. If you want to show, then it is okay, click on this active, and for snap you already told us what is the meaning of this snap to point is if you take any point, कोई point लेना चाहते in between from this box, then you have to deactivate this one, then you have to find from any point inside of that. तो ये चीज हो गई. अब इसमें तो हाँ, इसमें अब हम लोग देखते हैं इसका, this has no more work, so this. Okay, now I will see the
tools one by one. So यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ऊपर से सब काम I will इसको यहाँ से हम ले आते हैं This all are tools, sketcher tools. Sketcher में इतना ही होता है. This is sketcher. This is called workbench. Okay, इसमें workbench बोलते हैं इसको. This is called workbench. So these are tools. Tools में सबसे first tool is this one. This W is called workbench. This is exit workbench. ये this is sketcher. जैसे कोई sketcher मतलब कोई sketch करना है, कोई चीज ड्रॉ करना है, then you have to click this sketch and any, जैसे इसको क्लिक किए XY, अब एक प्लेन सिलेक्ट करना है कि किस in which plane you have to draw a model, a drawings. Suppose you want to choose, you want to draw in XY plane or Y, suppose ZX. So we take ZX and click on this sketcher toolbar. This is called tool sketcher. So we click this one. So this is, so see here in this compass XZ plane, here also XZ plane. So this is sometimes anybody asks that in which plane you are working, then you directly see here XZ, you see and you will tell. After that we'll and if we need to know that 1 2 means हमको बैक जाना है स्केचर में, वर्कबेंच से बाहर, तो इसको क्लिक करेंगे. ठीक है, क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे और एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो अंदर चले जाएंगे. So this is called workbench. And now after that another is called constant. इस constant के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. Okay, we'll talk later about this constant tool. और ये भी एक है, ठीक है. इसके बाद ऑपरेशन, दिस इज ऑफर ऑपरेशन टूल बार, इसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट दिस पी. दिस पी इज कॉल्ड प्रोफाइल टूल बार. मीन्स कोई भी एक प्रोफाइल बनाना. प्रोफाइल कहने के मतलब सपोज ए स्क्वायर बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगुलर, एनी सर्कुलर, you can also draw a cylindrical, means different shape. Then you will use these profile toolbars. So today we will see about one by one tool. So एक ये है, this call is profile. Actually this P for profile, all are toolbars. So first one is profile. अब इस प्रोफाइल में हम किसी तरह का प्रोफाइल खींच सकते हैं. सपोज दिस एक रेक्टेंगल हम बना सकते हैं, सिंपलेस्ट वन. ओके, ये हो गया. फिर प्रोफाइल, if you click this, then when this complete, suppose this, no need to further draw, हमको आगे ड्रॉ नहीं करना, तो इसको कैसे, how to eject from this, then you directly click this again or escape button in your keyboard 2 times, 1 2, it will automatically close. Okay, so again you have to delete this. Then actually this is purple color, so you directly delete button and delete. So from this profile you can profile any type of shape, there is no problem. Okay, any type of shape, and when the first and last point is met, then automatically it will fix. Okay, this one like that. So this is profile toolbar. Now here rectangular. Suppose there is a rectangle, you have to draw a rectangle, and directly click on this, and there are so many tools is present. This is rectangular, simple, general simple rectangle. This is oriented rectangle. This is parallelogram. This is elongated hole. This one is also cylindrical elongated hole. This is keyhole profile. This is hexagon. This is centered rectangular. This is centered parallelogram. Okay, so one by one we will see. So the rectangular, suppose this, directly click on this one, and you have to give 115. You put this, you activate this constant. So this is called giving the dimension. Here, dimension 100. इसको click करेंगे. We will click on this. Directly click on this. Then this will come constant definition. Then you change this value up to 100. This will 100. Okay, this is 100. Yeah, 100 होगी.
And now again this vertical height will be, we'll take 50, then this will be 90. So we'll click on this 90 and this will change into 50. So this is give 50 mm. Okay. So here how much? This is 50 and this is 100. So this is the rectangle, right? Okay. And this will move. You can see that anywhere because this is not constant. So later on I will tell you the how to constant this. Okay. Constant means how to fix. So this is our wall frame. This is our reference frame. Okay, yeah, this is horizontal, this is vertical. So from this axis we have to constant this, मैंने उसको fix करना. You have to fix from this axis. So if you vertically, suppose this is vertical movement, if we give a dimension from here to here, so suppose this is 50, so half we will take, means 25. So we'll take here from this, sorry, from this and this. How much? This will 30 already. We'll take 50, 25. Now this is fixed, means this height is fixed from this horizontal axis. So this will never move horizontal. It is vertically not move. It is horizontal move. Why horizontal? Because this length is not fixed. Only this length is given, but this length from reference axis to this side is not given. That's why it is moving. Okay, so to fix this you have to give a dimension. So again we'll take a click this constant and then this axis and any one side, suppose this. So this is will take 50. Anything you have to take 50. Now this will constant, fully constant. It will not move anywhere. If you click and move on this screen, then it will not move. If we again this is delete, then it is free. So when this is fully constant, you can see that control. Okay. When this is completely constant, then color is green color. It means it is completely constant. We delete this one. Here some white and some. So white means it is not complete constant. Okay. Means when means this side is not constant. So that's why this color is white. And when this is constant, so this color will change into green color. You can see this is green color. This is green color. Complete whole green means this is completely. So later on I also tell about how to fully constant, how to inconsistent, how to means half constant. All will be tell later on. Okay. Now, so this one delete. So this is rectangular. This is oriented rectangle. So this is oriented means. So for this draw this oriented, you click anywhere one point, then this and any third point 3 times. So this is oriented rectangle. Now another is your parallelogram. So you click here 3 points. So this will any point 3 points parallelogram. Similarly, you have to this keyhole. This is called, you can see that this is elongated hole. So 1 point, here 2 point, and draw. This is called elongated. You can also give the means this height is from the center. This is center line. So up portion is also 20 and below is also 20. Means hole is 20, 20. And this curve you can give also how much curve. Suppose here this is also 20. This is also 20 because this is 20. So this arc means the radius of this arc is also 20 and the length is not given. So you can put according to your length. You can 100. You can change it to 200. This will elongated. This is also not fixed according to this axis. So for fixing this, you have to take the dimensions from the origin or reference axis to the point, to the means line of this. इसके line तक लेना पड़ेगा.
तो ये हो गया तुम्हारा elongated hole. जैसे होल कहीं करना, होल करने का मतलब if any job is there and you have to make a hole, then directly you go to these options, this tool, and use, and directly you can create a hole on the object. Okay, this will use at the time of part design. जब हम part design करेंगे 3-dimensional modeling में solid modeling करेंगे, at that time we use these tools and we directly obtain the hole. ठीक है. उसके बाद इसमें after that next is this is cylindrical elongated hole. तो suppose a circular path is there और एक डिस्क है and you have to need then a circular hole. जैसे you have to see that in some you can say wheels में जो है wheel में तुम देखा कि circular holes is present in some vehicles like nowadays in scooty wheels you have to see that in the plate in the wheel scooty के wheel में there is a elongated hole which is not connected. Complete hole नहीं होता, पूरा circular नहीं होता, in a elongated hole and then some space and then again elongated hole, तो उसमें होता है. ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? जो फर्स्ट पॉइंट लिए, दिस इज लास्ट पॉइंट, this is third point, this is, so actually I have taken this is the first center point, then this is the first point from where you have to draw or start the hole. Then how much thickness thick hole, so this is click on that, this is given, so your radius is given, so how much radius you can see that this is 9, so you can change this in 20, this is using this tool, you have to first draw any rectangle. Suppose this. Now we have to draw a
parallel rectangle. Then we click this one, centered program. So the center of the program for this similar will be so this tool will be used इसके लिए पैरेललोग्राम के लिए सेंटर्ड प्रोग्राम. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट वी हैव टू चूज टू लाइन, this and this line. So this will give a this. It means this line is parallel to this and this line is parallel to this and similarly. So this is called centered parallelogram. Okay. So this all about your rectangle के बारे में था. Now another what is about circle के बारे में. Circle. So in circle there are so many circles. It is general circle. This is 3-point circle. This is circle using coordinates. This is tritangent circle. This is 3-point arc. This is 3-point arc starting with limits. Okay. तो इसमें जो है तो सर्कल के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे. तो जो सर्कल होता है वो सर्कल आपका डिफरेंट टाइप का होगा. कभी आर्क के बेसिस पे हो सकता है, कभी, ठीक है ना. तो सारा हम लोग चीज उसमें देख लेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे okay, one circle, general circle. If you dot a general circle, then directly click on this one, click on this one circle, and radius from you will take from this, click and this directly. You can change for directly click on this. Okay. General circle हो गया. How to draw this 3-point circle? Click on this 3 points. Take this 1 point, 2 point, and 3 point. Any 3 point. This is 3 points. 1 to 3 point circle. This is 3 point. Okay. Suppose you have to 3 points, 3 point, and you have to draw a, suppose like that. I will tell you this how to use this one. Okay. Suppose 3 point लेते हैं. This is point. So 1 point, 2 points, 3 points. I have to draw a circle passing through these 3 points, 1, 2, and 3. Then directly click this 3-point circle. Then we choose this point, and this point. So this is our result. Okay. यही इसका result है. इसको centered में करते हैं. This is your 1, 2, and 3 point. So this will be used. After that, another is this one. This is called circle using coordinate. एक coordinate का यूज करके सर्कल का ड्रॉ करना. डायरेक्टली क्लिक ऑन horizontal. So this value is the center. This value is the coordinate of the center. So I want to take the circle coordinate, center coordinate 0, 0 means origin. इसको हम लोग रखेंगे कैसे 0, 0, 0. This one 0. This is also suppose 0. 0, 0 तो है इसमें. And suppose radius of 50. I want to think 50. It okay. इसको देखते हैं क्या होता है. Okay. Center 50, 50. If you want to change the center, अगर center को change करना चाहते हो, you click this on center. Sorry. You click this center. Well, it will not change, but okay. So ओके तो इसमें हम लोग ओके वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ओके फॉर दैट विल सी दैट इसमें हम देखेंगे सेंटर चेंज करना होगा. सपोज 10. दिस विल टेक वर्टिकल एक्सिस में 20 एंड दिस इज 50. दिस विल center of this circle is in horizontal 10 mm and vertical the center is this will center 20 mm. It is shifted. So 3 points. उसके बाद हम लोग देखते हैं we'll see another this tritangent circle.
तो इसमें ट्राई टेंजेंट मतलब जो सर्कल होगा, द सर्कल विल बी पासिंग थ्रू 3 टेंजेंट्स. इट मे बी आर्क माने टेंजेंट्स जो 3 पॉइंट्स होगा. तो हाउ टू नो दिस, हाउ टू यूज दिस, इसको हम यूज कैसे करेंगे? विल टेक 3 लाइन्स, 1 2 3. Okay, so a circle touching through these 3 lines, how will draw? Directly click this, select all 3. This is everywhere it is tangent line. So this is called tangent circles. It also may be in place of line, it may be arc, like suppose 1, maybe 1 line, 2 lines. Okay, now we use this tangent, this. So for this 1 2 3. Okay, this we also passing through 3. It will tangent. After that another tool is क्या है ये? This is 3 point arc, 3 point arc, 3 point. We click this 1 point, 2 point. This is 3 point. The 3.2. So 1 here, 2 here, 3. This is 3 point arc. It means you know 3 point. At the time of drawing, you know the 3 point. How? We 1 point here, 2 and 3 point here. A arc we have to draw passing through 3 points. Then you click this, select this first point, the second point, and third point. So this is an arc which is passing from 3 points, 1 2 3. Okay, and after that arc. For arc you have to put, this will be the center. For a arc you click, this is the center and this is the first point of the arc from where it will start, जहाँ arc start होगा, and this will be the last point जहाँ तक arc we have to need, हमको arc यहाँ तक चाहिए, this one तक. So this for creating a arc you have to click on the center point and the first point and the second point which the arc जहाँ से वो start होगा, and the last point it will complete the arc. So this all about your circle. Circle, these 3 points. This is circle using coordinates. This is by tangent circle. This is 3 point arcs. This is 3 point arc starting with limits. And this is arc. ये हम लोग नहीं देखें limits को. इसका क्या है limits? देख लेते हैं. 2 ये limit है. It means limit. What is meaning of this? This is 1 point, this is to center. Okay, so this will change. You can, this can limit. This also happen like this, and this also कहीं भी हो सकता है. ठीक है, आपके उसके बाद ये this is spline. You know spline. Spline is a curve of flexible curve. Spline is a flexible curve. You draw in your own need, जैसे जरूरत है. जैसे at the time of drawing, the time of drafting के टाइम में हम क्या करते हैं? You use the French curve. So in French curve this spline is created. तो spline कितना 3-4 पॉइंट होता था. You can using these points and you draw this spline. So spline is, there is 2 types of spline, B-spline and Bezier spline. Okay, Bezier curve. One is B-spline. Spline is 2 types. Generally, basically, B-spline and Bezier curve. So Bezier curve, it is a local control, and B-spline it is a called a global control. मतलब ये जो पॉइंट है, अगर इसमें अगर पॉइंट को वेरी करेंगे, ये पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा
whole curve will change. ये whole curve ही change हो जाएगा. So this is called B-spline curve. Or if we change this point and only this area will be changed, then this is called Bezier curve. Means this is locally controlled. ये local control होता है. Okay. हम लोग अब इसमें 3 points लेते हैं. We'll check 3 points. 1, 2, 3, 4, 5. इतना point ले लिए. Now we have to draw a spline by joining this point, passing through this point. First this, then this, from this, then like that. Take 5. Click this one, then this, then this, then this, and finally this is your spline, which is passing through 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. These points may be anywhere. Okay. And after that, we draw a spline. Another spline we have to draw here. Okay. Now, actually, we have to show disconnect. What is the use of disconnect? So there is a 2 curve, this spline, 2 curves. We have to connect from here to here, and you also maybe connect this and this, and also maybe connect from this to this. Anywhere you connect. Suppose we connect from this. This is simple connection. This like this. Okay. After we connect this and this, so how this will connect? So this and this. So this is actually at the connection, the 2 lines will be tangential connection here. You can see the tangent. This will be tangential and inside of this. Again, we'll see this and this point. You can see this tangential. This curve is not connected up because this is tangential inside. So this is connected. The tangent will be fall inside. मतलब अंदर की ओर जो है वो fall करेगा. Not इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर there is no lines present. तो इसको check करते हैं. This point and this point. So this will connect not like this one. This will connect this and from this you see this and this. See, this is connected this and from this side inside. ये ऊपर से connect नहीं हुआ. क्यों? Because ऊपर कोई line ही नहीं है. जो line होगा वो line जो tangent होगा उसके along होगा. So this is passing through this one. तो ये हो गया connected का connection, about connection. Now another is, this is ellipse. This is parabola, and then a hyperbola, and this is focus conics. तो इसमें जो ellipse है, we click this ellipse. So ellipse है major and minor axis. We click this center, and this is major axis, and this is give your, this is major axis. So this is your major axis. This is major and minor, maybe you change. So this is minor. So you click this minor. So this is give your ellipse. And so for drawing this ellipse, what we'll do? Center point, then the major point, then your minor point. So this is called the ellipse. And another is given what? Parabola. So for drawing a parabola, what we'll do? You click this one. So this is your focus. In parabola, this is focus. This point is called apex. Apex. And from where it will start? So the parabola will start from this, and we last. You may also increase from this or decrease. Anywhere you, according to your choice, you can also take from here, no problem. This is your parabola. So this is your focus, this is your apex, and from starting from, so means, okay, so you, after that, hyperbola. So for hyperbola, you click this.
So this is your focus, and this is your this point is your two curve incidence. This, okay, and after that you have to fix this point, this apex. It, because this point was not present in the case of parabola, drawing parabola. So we click here, this is the focus, and click this. So this point is the intersection of two tangent, which is parallel to the hyperbola. Okay, so this is, and now we fix this apex, we fix here. Now this hyperbola we want to draw from this point to this point, or maybe this point, any point. So this is your hyperbola. Okay, so this point is actually intersection of the tangent line passing through this these two sides of hyperbola. इसके बाद हम लोग और एक देखेंगे, this is called conics. In conics we this no, एक्चुअली कॉनिक को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 लाइन्स होना चाहिए. जैसे एक लाइन यहाँ पर है एंड अनदर लाइन. अब इसमें नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए कॉनिक इन दिस. सो क्लिक दिस कॉनिक, दिस लाइन एंड दिस लाइन. सो दिस विल गिव कॉनिक. एंड हाउ मच दिस कर्व अकॉर्डिंग टू यू, हाउ शुड दिस लीन, तो ये उसके अकॉर्डिंग लीन करें. दिस इज कॉल्ड कॉनिक. And finally, there is a line. This is a line. कोई एक लाइन लेना है तो you click this directly line. दूसरा क्या है? This is infinite line. You click, देखो infinite line है ये, infinite line. इसके बाद ये क्या है? This is bitangent. Bitangent. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करेंगे हम लोग bitangent के लिए 2 lines लेते हैं. We take 2 lines और 2 curve लेते हैं. We take 2 curves. Suppose 2 circles. This one circles, another one curve. ठीक है. इस पर tangent, by tangent we directly click this. So we select this and then this. So this will by tangent. ये line भी हो सकता है, curve भी हो सकता है, anything. We take this by tangent. Then this is bisecting lines, 2 lines का bisecting, 1 line, another 2 line. We need a bisecting lines. So directly we click this one and select first line and then second line. This will give the bisecting lines. And now after that, this is perpendicular to any plane or something. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Any arc you take, ये arc ले. We have to draw a perpendicular from a point. यहाँ से एक perpendicular डालना चाहते हैं. Then click this icon. This from these points we click this point to this plane. इस plane पे यहाँ select करेंगे. If you select here, but perpendicular is not here. Perpendicular will always his shortest point. ये पर यहाँ पर आएगी. If you click anywhere, यहाँ पर anywhere click. Suppose you click in this way. Another we want to from this point to here. These points हम लोग चाह रहे हैं. Click this one. यहाँ पर होगा. Okay. So this is the process of. After that, another is this is line. This completed. This completed. Another is this is axis. We suppose want to ये तो एक axis है. We want to another axis here. You click this and you according to your choice do draw an axis. Okay. Axis and then this is the point. ये point, single point. ये point, ये क्या है? Point by using coordinate. अब जैसे यहाँ 10 पे एक point होना चाहिए directly. अब we know the coordinate of the points. Then you directly click this. Put the coordinate like 10 और ये नीचे का 20. Click the point यहाँ पर 10, 20. अगर coordinate पता है, if you know coordinate, then you directly open this. ये equidistance, जैसे एक लाइन है. Suppose लाइन, ये लाइन तुम्हारा कितना है? 10, 100 mm.
इसको 100 mm कर देते हैं, सॉरी 10 हो, 100 mm। इसमें 10 इक्विडिस्टेंस, हमको इक्विडिस्टेंस लाइन चाहिए, वी नो इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स, वी क्लिक दिस। हाउ मेनी न्यू पॉइंट्स? 10 चाहिए, नहीं हमको 5 चाहिए, ओनली 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स की 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 equidistance points, okay। And now another is this one, intersection point, suppose two curve, two lines, suppose this one curve, another is, suppose one curve is there, okay। We don't know how exact this point is, then इसको click करेंगे intersection point, we click this one, this one, so this is the your point, this is the point। So actually you don't know how this means coordinate kitna hai, then you directly click on this, then this will give your horizontal vertical point coordinates। And after that another is, this is projection point, means suppose a line here, and there is a point here, a point, we have to project this point here perpendicular, but कहाँ पर होगा ये तो हम नहीं जान पा रहे हैं, we don't know where, then we use this tools projector, we click this and this line, so here point, this point is projected on this line, this may be line, the arc or circular or anything, so this will project here perpendicular distance will be shortest perpendicular। So this was the profile toolbar, ये profile toolbar है। तो any queries, any problem regarding this profile toolbar or till whole class any, then you will ask। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आज, किसी के चीज में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा, या कोई अगर किए हो तो उसको अगर कहीं पर हुआ कि नहीं ये चीज सर ऐसा नहीं हुआ, बहुत so many student you have done this broadcast, अगर कोई किए हो तो। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी का ब्रॉडकास्ट फर्स्ट क्लास हुआ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। और नहीं वो आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा ना। अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये बता दूंगा कि नियर अबाउट योर जो भी फ्रेंड सर्किल में है, नियर अबाउट कोई है ड्यू टू दिस कोविड, और किसी के पास प्रोकास्ट सॉरी केटिया का सॉफ्टवेयर है तो वो एक दूसरे को वो दे सकते हो, कंप्यूटर है तो उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल इसका ही है, ठीक है ना। उसको कर सकते हो, करके जिसके पास है अभी वो कम से कम हैंड्स ऑन कर लो, वो प्रैक्टिस कर लो। अभी जितना मैं बताया वो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसमें क्या होगा कि और कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी जो मैं चीज़ बताया वो व्हेन यू स्टार्ट टू मीन्स ड्रॉ ना, तो उसमें पता चल जाएगा। अभी जैसे ओपन कॉलेज ओपन होगी, यू कैम हियर एंड यू विल प्रैक्टिस 24 आवर, इट विल ओपन द कास्टिंग लैब, जब वो होगा डिजाइन लैब तो उसमें तुम बैठ के करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ होगा। और वो प्रेजेंट है कहीं पर कुछ होगा तो वो तुम पूछ सकते हो, जैसे रेक्टेंगल कैसे करेंगे, आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन क्या होगा, कॉनिक्स कहाँ से होगा, ये सारा प्रोफाइल टूलबार में तुम लोग देख चुके हो। जिसके पास अभी है और फिलहाल यू विल प्रैक्टिस, जिसके पास नहीं है एटलीस्ट ये जो है मतलब जो मैं बोला उसको थोड़ा मतलब कहीं एट द टाइम ऑफ हुई तुम लिख के भी रख सकते हो कि ये पॉइंट हमने नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया, तो बाद में उसको नेक्स्ट क्लास भी उसको ही करूँगा। अभी बहुत सारा तुम्हारा वीडियो वगैरह ट्यूटोरियल तुमको मिलेगा इसमें यूट्यूब वगैरह में, उसको भी देख के तुम लोग ये कर सकते हो थोड़ा सा। अभी जो मैं चीज़ बताया और उसमें बहुत सारा चीज़ और है, अभी जैसे सब आइकन्स के बारे में कंस्टेंट है और ये सब ऑपरेशन टूलबार है, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। और अभी इतना जो बता दिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी जो स्नैपी ग्रिड्स एंड ऑल्सो कस्टमाइज ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ये जो अभी व्यू टूलबार है इसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये क्या है एट द टाइम ऑफ जो आप मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी को ही करेंगे क्रिएट करेंगे उसमें एट दैट टाइम ऑल दिस टूल्स विल बी यूज्ड। नेक्स्ट क्लास में जो भी समझ में नहीं आएगा वो डायरेक्टली आस्क, चुप नहीं रहना है, आस्क, ठीक है ना। वो क्या होगा कि मान लो इफ यू विल आस्क, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज मींस गोइंग ऑन माइंड बट नॉट एबल टू आस्क, वो नहीं पूछ पा रहा, यू कैन उसका भी क्लियर होगा अभी होगा।
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर हाँ टेल। सर वो लैपटॉप नहीं है सर मेरे पास, ये कैसे फिर होगा सर? नहीं, अगर कोई फ्रेंड्स के पास है तुम्हारा, अगर अभी मान लो नहीं है तो कहीं से सॉफ्टवेयर जुगाड़ के एनी फ्रेंड, जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्किल है नियर अबाउट है, अगर है तो उसको तुम करो, अगर नहीं भी है ना तो मैं उसके लिए बोल रहा था, अगर इफ एनीबडी हैव नॉट प्रेजेंट तो वो अभी क्लास खाली अटेंड करो, क्योंकि तुम्हारा अब जल्दी ही जल्द कॉलेज खुलेगा तो आके तुमको करना है। लेकिन इस सब क्या होगा, तुमको देख के एक बार देख के रहोगे ना, उसमें आके फिर जो भी ये होगा तो सारा चीज वो पता चलेगा। और तुम अपना फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, आई विल ऑल्सो प्रेजेंट, उससे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जिसके पास है वो उसको कर दे, तो जिसके पास नहीं है वो कम से कम ये सब जो आइकन्स वगैरह बोले, वो आइकन्स को लिख के कॉपी वगैरह में रखो कि क्या क्या आइकन होता है, कैसे होता है, इतना चीज। और जो भी क्लास होगा उसको अभी अटेंड करो, और जब आओगे ना इसमें कॉलेज में तो सारा चीज तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि एक बार देख के रहोगे उसमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई फ्रेंड के पास है तो उसको थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा तो दे ही सकता है, थोड़ा सा देख लोगे एक बार चला कर क्या है नहीं। और बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, ये आराम से अवेलेबल हो जाता है। और नहीं होगा तो फ्रेंड सर्कल के पास देख लो और उसको करो, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल है अभी ड्यू टू कोविड, ओके, फिर तो कॉलेज ओपन होगी, ठीक है। ओके ओके, चलो वाइंड अप करते हैं आज।